आवारा भीड़ के खतरे। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई की लिखी ये प्रसिद्ध रचना जो उन्होंने 1991 में लिखी थी। आज इस निबंध को आप हिंदी और उसके बाद उसके अंग्रेजी अनुवाद दोनों में सुन सकेंगे। सुनिए और सोचिए कि क्या ये निबंध इस समय के भारत के लिए बहुत प्रासंगिक है अथवा नहीं। तो सुनिए, आवारा भीड़ के खतरे। एक अंतरंग गोष्ठी सी हो रही थी युवा असंतोष पर। इलाहाबाद के लक्ष्मीकांत वर्मा ने बताया, पिछली दीपावली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुंदर साड़ी से सजी एक सुंदर मॉडल खड़ी थी। एक युवक ने एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। कांच टूट गया। आसपास के लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तमतमाए चेहरे से जवाब दिया, हरामजादी बहुत खूबसूरत है। हम 4-5 लेखक चर्चा करते रहे कि लड़के के इस कृत्य का क्या कारण है, क्या अर्थ है, यह कैसी मानसिकता है, ये मानसिकता क्यों बनी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये सवाल दुनिया भर में युवाओं के बारे में उठ रहे हैं, पश्चिम से संपन्न देशों में भी और तीसरी दुनिया के गरीब देशों में भी। अमेरिका से आवारा हिप्पी और हरे राम और हरे कृष्ण गाते अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट युवा भारत आते हैं और भारत का युवा लालायित रहता है कि चाहे चपरासी का नाम मिले अमेरिका में रहूं। स्टेट्स जाना यानी 24 घंटे गंगा नहाना है। ये अपवाद हैं। भीड़ की भीड़ उन युवकों की है जो हताश, बेकार और क्रुद्ध हैं। संपन्न पश्चिम के युवकों के व्यवहार के कारण भिन्न हैं। सवाल है, उस युवक ने सुंदर मॉडल पर पत्थर क्यों फेंका? हरामजादी बहुत खूबसूरत है, ये उस गुस्से का कारण क्यों? वाह कितनी सुंदर है, ऐसा इस तरह के युवक क्यों नहीं कहते? युवक साधारण कुर्ता पजामा पहने था, चेहरा बुझा था जिसकी राख में चिंगारी निकली थी पत्थर फेंकते वक्त। शिक्षित था, बेकार था, नौकरी के लिए भटकता रहा था, धंधा कोई नहीं, घर की हालत खराब, घर में अपमान, बाहर अवहेलना। वह आत्मग्लानि से क्षुब्ध, घुटन और गुस्सा, एक नकारात्मक भावना, सबसे शिकायत। ऐसी मानसिकता में सुंदरता देखकर चिढ़ होती है, खिले फूल बुरे लगने लगते हैं, किसी के अच्छे घर से घृणा होती है, सुंदर कार पर थूकने का मन होता है, मीठा गाना सुनकर तकलीफ होती है, अच्छे कपड़े पहने खुशहाल साथियों से विरक्ति होती है। जिस भी चीज से खुशी, सुंदरता, संपन्नता, सफलता, प्रतिष्ठा का बोध होता है, उस पर गुस्सा आता है। बूढ़े सयाने स्कूल का लड़का अब मिडिल स्कूल में होता है, तभी से शिकायत होने लगती है। वे कहते हैं, ये लड़के कैसे हो गए, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हम पिता, गुरु, समाज के आदरणीयों की बात सिर झुकाकर मानते थे, अब ये लड़के बहस करते हैं, किसी को नहीं मानते। मैं याद करता हूँ कि जब मैं छात्र था तब मुझे पिता की बात गलत तो लगती थी, पर मैं प्रतिवाद नहीं करता था। गुरु का भी प्रतिवाद नहीं करता था, समाज के नेताओं का भी नहीं। मगर तब हम छात्रों को, जो किशोरावस्था में थे, जानकारी ही क्या थी। हमारे कस्बे में कुल 10-12 अखबार आते थे, रेडियो नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का जमाना था, सब नेता हमारे हीरो थे, स्थानीय भी और जवाहरलाल नेहरू भी। हम पिता, गुरु, समाज के नेता आदि की कमजोरियां नहीं जानते थे। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे पिता कोयले के भट्टों पर काम करने वाले गोंडों का शोषण करते थे। पर अब मेरा 11 साल का नाती 5वीं कक्षा का छात्र है। वह सवेरे अखबार पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, रेडियो सुनता है। वह तमाम नेताओं की पोलें जानता है, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की आलोचना करता है। घर में उससे कुछ ऐसा करने को कहो तो वह प्रतिरोध करता है। मेरी बात भी तो सुनो, दिन भर पढ़कर आया हूं, अब फिर कहते ही कि पढ़ने बैठ जाऊं। थोड़ी देर खेलूंगा तो पढ़ाई भी नहीं होगी, हमारी पुस्तक में लिखा है। वह जानता है घर में बड़े कब कब झूठ बोलते हैं। ऊंची पढ़ाई वाले विश्वविद्यालय के छात्र सवेरे अखबार पढ़ते हैं तो तमाम राजनीति और समाज के नेताओं के भ्रष्टाचार, पतनशीलता के किस्से पढ़ते हैं। अखबार देश को चलाने वालों और समाज के नियामकों के छल,
कपट, प्रपंच, दुराचार की खबरों से भरे रहते हैं। धर्माचार्यों की चरित्रहीनता उजागर होती है। यही नेता अपने हर भाषण, हर उपदेश में छात्रों से कहते हैं, युवकों, तुम्हें देश का निर्माण करना है क्योंकि हमने नाश कर दिया है। तुम्हें चरित्रवान बनना है क्योंकि हम तो चरित्रहीन हैं। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र को ग्रहण करना है। हमने शिक्षा और अशिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना सीखा। इन नेताओं पर छात्रों युवकों की आस्था कैसे जमे? छात्र अपने प्रोफेसरों के बारे सब जानते हैं, उनका ऊंचा वेतन लेना और न पढ़ाना, उनकी गुटबंदी, एक दूसरे की टांग खींचना, नीच कृत्य, द्वेषवश छात्रों को फेल करना, पक्षपात, छात्रों का गुटबंदी में उपयोग। छात्रों से कुछ नहीं छिपा रहता अब। वे घरेलू मामले जानते हैं। ऐसे गुरुओं पर छात्र कैसे आस्था जमाएं? ये गुरु कहते हैं, छात्रों को क्रांति करना है। वे क्रांति करने लगे तो पहले अपने गुरुओं को साफ करेंगे। अधिकतर छात्र अपने गुरु से नफरत करते हैं। बड़े लड़के अपने पिता को भी जानते हैं। वे देखते हैं कि पिता का वेतन तो 7,000 है, पर घर का ठाठ 8,000 रुपयों का है। मेरा बाप घूस खाता है, मुझे ईमानदारी के उपदेश देता है। हमारे समय के लड़के लड़कियों के लिए सूचना और जानकारी के इतने माध्यम खुले हैं कि वे सब क्षेत्रों में अपने बड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए युवाओं से ही नहीं, बच्चों तक से पहले की तरह की अंधभक्ति और अंध आज्ञाकारिता की आशा नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ ज्ञानी ने बहुत पहले कहा था, प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरित। उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। कल परसों मेरा 12 साल का नाती बाहर खेल रहा था। उसकी परीक्षा हो चुकी है और एक लंबी छुट्टी है। उससे घर आने के लिए उसके चाचा ने 2-3 बार कहा, डांटा। वह आ गया और रोते हुए चिल्लाया, हम क्या करें, ऐसी तैसी सरकार की जिसने छुट्टी कर दी। छुट्टी काटना उसकी समस्या है, वह कुछ तो करेगा ही। दबाओगे तो विद्रोह कर देगा। जब बच्चे का ये हाल है तो किशोरों और तरुणों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल एवं सार्थक होते देखते हैं। मूल्यों का संकट भी उनके सामने है। सब तरफ मूल्यहीनता उन्हें दिखती है, बाजार से लेकर धर्मस्थल तक। वे किस पर आस्था जमाएं और किसके पदचिन्हों पर चलें? किन मूल्यों को माने? यूरोप में दूसरे महायुद्ध के दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई उसे लॉस्ट जनरेशन यानी खोई हुई पीढ़ी का कहा जाता है। युद्ध के दौरान अभाव, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा की ठीक व्यवस्था नहीं। युद्ध में सब बड़े लगे हैं तो बच्चों की परवाह करने वाले नहीं। बच्चों के बाप और बड़े भाई युद्ध में मारे गए। घर का, संपत्ति का, रोजगार का नाश हुआ। जीवन मूल्यों का नाश हुआ। ऐसे में बिना उचित शिक्षा, संस्कार, भोजन, कपड़े के विनाश और मूल्यहीनता के बीच जो पीढ़ी बनकर जवान हुई, तो खोई हुई पीढ़ी, इसके पास निराशा, अंधकार, असुरक्षा, अभाव, मूल्यहीनता के सिवाय कुछ नहीं था। विश्वास टूट गए थे। यह पीढ़ी निराश, विध्वंसवादी, अराजक, उपद्रवी, नकारवादी हुई। अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑसबर्न ने इस क्रुद्ध पीढ़ी पर नाटक लिखा था जो बहुत पढ़ा गया और उस पर फिल्म भी बनी। नाटक का नाम लुक बैक इन एंगर। मगर ये सिलसिला यूरोप के फिर से व्यवस्थित और संपन्न होने पर भी चलता रहा। कुछ युवक समाज के ड्रॉप आउट हुए। वीट जनरेशन हुई। औद्योगिकरण के बाद यूरोप में काफ़ी प्रतिशत बेकारी है। ब्रिटेन में 18% बेकारी है। अमेरिका ने युद्ध नहीं भोगा, मगर व्यवस्था से असंतोष वहां पैदा हुआ। अमेरिका में भी लगभग 20% बेकारी है। वहां एक ओर बेकारी से पीड़ित युवक है तो दूसरी ओर अतिशय संपन्नता से पीड़ित युवक भी। जैसे यूरोप में, वैसे ही अमेरिकी युवकों युवतियों का असंतोष विद्रोह, नशेबाजी, यौन स्वच्छंदता और विध्वंसवादिता में प्रकट हुआ।
जहाँ तक नशीली वस्तुओं के सेवन के सवाल हैं, ये पश्चिम में तो है ही, भारत में भी खूब है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अनुसार 2 साल पहले 57% छात्र नशे के आदी बन गए थे। दिल्ली तो महानगर है, छोटे शहरों में, कस्बों में नशे आ गए हैं। किसी किसी पान की दुकान में नशा हर जगह मिल जाता है। स्मैक और पॉट टॉफी की तरह उपलब्ध हैं। छात्रों, युवकों को क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की शक्ति मानते हैं। सही मानते हैं, अगर छात्रों युवकों में विचार हो, दिशा हो, संगठन हो और सकारात्मक उत्साह हो। वे अपने से ऊपर की पीढ़ी की बुराइयों को समझें तो उन्हीं बुराइयों के उत्तराधिकारी न बने, उनमें अपनी ओर से दूसरी बुराइयां मिलाकर पतन की परंपरा को आगे न बढ़ाएं। सिर्फ आक्रोश तो आत्मक्षय करता है। एक हर्बर्ट मार्क्यूस चिंतक हो गए हैं जो सदी के 6वें दशक में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वे स्टूडेंट पावर में विश्वास करते थे, मानते हैं कि छात्र क्रांति कर सकते हैं। वैसे सही बात यह है कि अकेले छात्र क्रांति नहीं कर सकते, उन्हें समाज के दूसरे वर्गों को शिक्षित करके चेतनाशील बनाकर संघर्ष में साथ लाना होगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आखिर क्या बदलना है, ये तो तय हो। अमेरिका में हर्बर्ट मार्क्यूस से प्रेरणा पाकर छात्रों ने नाटक ही किए। हो ची मिन्ह और चे गुएवारा के बड़े बड़े चित्र लेकर जुलूस निकालना और भद्दी भौंडी अश्लील हरकतें करना। अमेरिकी विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं में बेहद फूहड़ अश्लील चित्र और लेख कहानी। फ्रांस के छात्र अधिक गंभीर शिक्षित थे। राष्ट्रपति द गॉल के समय छात्रों ने सोरबोन विश्वविद्यालय में आंदोलन किया। लेखक जेन पॉल सार्त्रे ने उनका समर्थन किया। उनका नेता कोहने बेंडी प्रबुद्ध और गंभीर युवक था। उनके लिए राजनैतिक क्रांति करना संभव नहीं था। फ्रांस के श्रमिक संगठनों ने उनका साथ नहीं दिया, पर उनकी मांगें ठोस थीं, जैसे शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन। अपने यहाँ जैसी नकल करने की छूट की क्रांतिकारी मांग उनकी नहीं थी। पाकिस्तान में भी एक छात्र नेता तारिक अली ने क्रांति की धूम मचाई, फिर वह लंदन चला गया। युवकों का यह तर्क सही नहीं है कि जब सभी पतित हैं तो हम क्यों नहीं हों। सब दलदल में फंसे हैं तो जो नए लोग हैं उन्हें उन लोगों को वहां से निकालना चाहिए, ये नहीं कि वे भी उसी दलदल में फंस जाएं। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवकों की बड़ी भूमिका रही है। मगर जो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी की पतनशीलता अपना ले क्योंकि वह सुविधा की है और उसमें सुख है, तो वह पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे युवक हैं जो क्रांतिकारिता का नाटक बहुत करते हैं पर दहेज भरपूर ले लेते हैं। कारण बताते हैं, मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूं पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा। यदि युवकों के पास दिशा हो, संकल्पशीलता हो, संगठित संघर्ष हो, तो वह परिवर्तन ला सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं एक नई पीढ़ी अपने से ऊपर की पीढ़ी से अधिक जड़ और दकियानूसी हो गई है। ये शायद हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से तत्ववादी, बुनियाद परस्त यानी फंडामेंटलिस्ट लड़का है। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फैशिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है। इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आवारा भीड़ के खतरे। अब सुनिए इसी लेख का अंग्रेजी अनुवाद, द डेंजर्स ऑफ अ रेस्टलेस मॉब बाय हरिशंकर परसाई। Within our group of 4 or 5 writers, we were talking about the growing disillusionment of youth. Lakshmikant Verma, who is from Allahabad,
narrated an incident that took place last Diwali. A sari shop had placed a beautiful mannequin in its window. All of a sudden, a youth picked up a stone and hurled it at the model. The glass shattered. When bystanders asked him why he did what he did, his face flushed with anger and he snapped back, "She is too damn beautiful." We debated the reason behind the young man's action. What does it mean? What kind of a mentality does it highlight? How and why did this mentality come into being? In the latter half of the 20th century, this question is being raised all over the world, from the developed nations of the West to the poor nations of the Third World. From America, vagabond hippies as well as youths make their way to India, the latter chanting Hare Rama Hare Krishna to show their disillusionment with their system. India's youth nurses a perennial thirst to live in America, even if it means taking up menial jobs there. Going to the USA is like bathing in the Ganga all 24 hours, so goes the script. But this scenario is an exception. The crowds that mill are of youngsters who are dejected, jobless, and angry. There's a world of a difference between the youth of the prosperous West and India. The question remains, why did the youth throw the stone at the face of the beautiful mannequin saying, "She is too damn beautiful"? Why should the mannequin's beauty be a cause for anger? Why doesn't a response such as "Wow, how beautiful" escape the lips of such youths? The young man in question was wearing an ordinary kurta pajama. Listlessness was writ large on his face. The only time his face had lit up momentarily, like a spark from a dying ember, was when he hurled the stone. Educated and jobless, he was thrashing around in search of a job. He had absolutely nothing to occupy him. The young man's family was going through hard times, facing insults at home and indifference outside. He was full of angst, suffocating anger and negativity, nursing a grievance against the whole world. In such a frame of mind, the mere sight of beauty is a sore irritant. Flowers in bloom seem obnoxious. Someone's beautiful house becomes an object of hatred. A stylish car makes you want to spit on it. Hearing a melodious song is to suffer distress. One feels alienated from friends who are well turned out and well to do. Anything that carries an echo of happiness, beauty, prosperity, success, or prestige triggers rage. The complaints start from the time when the son of mature, aged parents reaches middle school. They ask in bewilderment, "What have these boys become? It wasn't so in our time. We used to bow before the wishes of our fathers, guru, and venerable members of society. Now all these boys do is argue, engage in contestation. They don't care two hoots for anybody." I recall instances when I thought my father was wrong, but I never argued with him. I did not argue with my gurus or the upholders of society either. We were adolescents then. We didn't know any better. Our town used to get 10 to 12 newspapers. There was no radio. It was the time of the freedom struggle. We hero worshipped all our political leaders, the local ones as well as Jawaharlal Nehru. We had no idea about the weaknesses of our fathers, gurus, and leaders of society. I came to know much later that my father used to exploit the Gond laborers who worked in the coal mines. But now, my grandson, who studies in the fifth standard, reads the morning papers, watches television, and listens to the radio. He is aware of the skeletons rattling in every politician's closet. He critiques Devilal and Chautala and argues in the same tone if you tell him to do something at home. "You must hear me out. Having spent the entire day studying, I have just returned from school, and you want me to bury my nose in textbooks again? If I don't play for a while, I won't be able to study either. That is what our textbook says." He knows exactly when the elders of the house resort to lies. When university students pursuing higher studies scan the morning papers, they devour every story of corruption and degeneration there is to read about leaders in politics and society. The newspapers are bursting with stories about the hypocrisy, skullduggery, and depravity of people who run the country and are pillars of the society.
The lack of character that afflicts these so called upholders of morality and duty is highlighted in other ways as well. In every speech, every sermon they deliver to the students, these leaders pontificate. It is your task to build this nation because we have destroyed it. It is you who must be morally upright because we are depraved. The end goal of education is not to make money but to develop an ethical character because we learned how to be unethical and make money out of education and ignorance. How can students be expected to believe in them, look up to them? Students know everything about their professors. The fact that they take home high salaries without teaching, indulge in factionalism, pull one another down, act mean, fail students out of spite, play favorites, and make use of students in their factional spats. Nothing remains hidden from students these days. They even know how teachers conduct their private lives. In such a situation, how can students have firm belief in them? The gurus drone on that the students must engage in revolution. If they do that, their first move will be to do away with their teachers. A majority of students despise their teachers. The older ones know their parents well too. They can see that the father's salary is all of 7,000 rupees, but the comforts in the house bespeaks an income closer to 8,000 rupees. The son thinks, my father takes bribes but teaches me lessons in honesty. Our young boys and girls have access to so many avenues of information and knowledge that they know the truth about their elders in every walk of life. Hence, to expect unquestioning obedience not just from the youth but even from children would be unrealistic. There's an old Sanskrit saying that when your child turns 16, stop being their parents and start being their friends. At most, one can talk to them, reason with them. A couple of days ago, my 12-year-old grandson was playing outside. His exams are over and the long vacation has started. His uncle called out to him a couple of times to return home, giving the boy an earful. The boy came home. Sobbing angrily, he shouted, "What are we to do? Blast the government for giving such long vacations." How to spend the vacation poses a genuine problem for the boy. He is bound to do something after all. Come down on him heavily, and he will rebel. If this is how a child responds, imagine how youths would react. What young men and women are facing is a crisis of faith. Their elders stand thoroughly exposed before them. They see ideals, principles, and ethics being thrown to the wind. They see deceit, unethical conduct, dishonesty, and base behavior succeeding, being profitable. The young are also facing a crisis of values. They see a lack of values everywhere, from the marketplace to sacred sites. Whom should they believe in? In whose footsteps should they follow? Which values should they invoke? The generation that was born during World War II was called the lost generation. There was scarcity and hunger, lack of proper education and healthcare systems. When adults are consumed by war, there's nobody to look after the children. The fathers and elder brothers of these children died in the war. Homes, properties, and jobs were destroyed. So were values of life. In such circumstances, the children who grew up without proper education, refinement, nutrition, clothing, and values became youths of the lost generation. Other than despair, darkness, insecurity, dearth, and lack of values, they had nothing to hold on to. Their beliefs lay in tatters. The lost generation was disillusioned, destructive, anarchic, disaffected, and nihilistic. George Osborne wrote a play on the angry generation which was much read and also made into a film. The play was titled Look Back in Anger. This state of affairs continued even as Europe regained order and prosperity. A section of youths dropped out of society. The Beat generation was born. Industrialized Europe continues to face high unemployment. In Britain alone, unemployment has touched 18%.
The United States of America may not have suffered World War II in the manner of other allies, but it too could not remain untouched by youth disillusionment with the system. The USA has an unemployment rate of about 20%. On one hand, are youngsters affected by unemployment, and on the other hand, are youths affected by problems of plenty or excessive prosperity. In the US, as in Europe, the discontentment of young men and women expressed itself through rebellion, drug use, free sex, and destructiveness. Drug consumption in the West is a known fact, but it is widespread in India too. According to a Delhi University survey conducted 2 years ago in 1989, 57% male students and 35% female students were used to taking drugs. Fine, Delhi is a metro, but drugs have reached small cities and towns as well. In several places, pawn shops are well stacked with all kinds of drugs. Smack and pot are easily available as candies. Students and youth are considered the force of revolution and social transformation, and for good reason. If they have the strength of ideas, a sense of direction, organization, and positive energy, and they are able to comprehend the ills of the older generation, then they would neither inherit the weaknesses of their elders nor add some of their own to take the tradition of degeneration forward. Mere angst is self destructive. The ideas of noted thinker Herbert Marcuse were hugely popular and influential in the 1960s. He had great faith in the idea of student power. He was of the firm belief that students can bring about a revolution. The truth, however, is that by themselves, students cannot bring about a revolution. They need to educate other sections of society, conscientize them, include them in the struggle, set a purpose and a goal. Most importantly, what needs to be changed has to be decided first and foremost. In the US, students influenced by Marcuse engaged more in dramatics, taking out marches armed with huge posters of Ho Chi Minh and Che Guevara and indulging in acts perceived as indecent, unrefined, and uncouth in order to be provocative. The education of French university students inclined them towards a more serious and thoughtful response. They started a movement in Sorbonne University during the time of President Charles de Gaulle. Writer, philosopher, and political activist Jean Paul Sartre supported them. Student leader Daniel Cohn-Bendit was a serious intellectual. To bring about a political revolution was not possible for the students. They were not supported by workers' organizations, but the demands they put forth, such as for a fundamental change in the education system, were sound, unlike our students' revolutionary demand that copying be allowed. In Pakistan, too, a young student leader, Tariq Ali, created an uproar by raising the cry of revolution. Then he went to London. The reasoning employed by youth that when everybody else is degraded, why not us too, is fallacious. If people are mired in quicksand, then those from the new generation should be to trying to pull them out of it, not get caught in the quicksand themselves. In all the revolutions and social transformations that have taken place in the world, the youth have played a big role. However, a generation that is content to adopt or embrace the degradation of their elders because it is convenient and offers pleasurable comforts will never be able to bring about any change. Then there are youths who stage plays with a revolutionary message ad nauseum but take humongous dowries without fail. They are ready with a reason too. I couldn't care less about dowry, but what to do? I had to bow before my father's wishes. If youngsters have a sense of direction, ideology, and resolve, as well as the ability for organized struggle, then they can surely bring about change. What I am seeing is something else, a new generation that is even more inert and conservative than the older generation. Maybe it has something to do with fatalism born of frustration that the son has turned out to be more of an essentialist and fundamentalist than his father. A crowd made up of aimless, frustrated, nihilistic,
destructive, and jobless youths is dangerous. They can be mobilized by people or groups sworn to dangerous ideologies. Napoleon, Hitler, Mussolini, they all made use of this crowd. This crowd starts following religious fanatics. It is prone to becoming part of any organization that whips up fundamentalism and discord. Then this crowd can be made to indulge in all kinds of destructive acts. This crowd can easily become the weapon of fascists. It is this very crowd which is on the rise in our country. It is being readied as well. In the times ahead, this crowd could be marshaled to crush and destroy all national, humane, and democratic values. Friends, you were listening to Harishankar Parsai's essay, The Dangers of a Restless Mob, which is the English translation of Avara Bhir ke Khatre. This essay was written in 1991.